Hello students, today we are going to study the effect of change of temperature on the state of matter कि matter का state कैसे change करता है अगर temperature changes होते हैं. Okay. So before we begin the lecture, आप subscribe कर लो channel को so that you get regular updates about any video uploads. So a very important question arises that can matter change its state? क्या स्टेट चेंज हो सकता है? जैसे कोई मैटर सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड से लिक्विड हो जाए या लिक्विड से गैशियस स्टेट या गैशियस से सॉलिड एंड सो ऑन. ओके, तो यही अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये सीखा है कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. ओके, सॉलिड कैसे होता है? वो आइस के फॉर्म में, लिक्विड एज यू ड्रिंक द वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर. ओके, so what happens inside the matter during the change of state? कि अगर state change होगा, जैसे ice से water में change हुआ suppose, तो उसमें internal changes क्या आते हैं? What happens to the particles of matter during the change of states? उसके particles में क्या changes आते हैं? And how does this change of state take place? तो कैसे change होगा? जैसे ice से आपको अगर liquid water में convert करना है तो वो कैसे होगा? All these questions we are going to answer in this lecture. So let us perform simple activities to understand the effect of change of temperature. So this is activity 1.12. Okay. So we are taking about 150 grams of ice in a beaker. ये beaker है, इसमें आपने ice ली है. And suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice. ये थर्मामीटर है, ये बल्ब, इट्स इन कॉन्टैक्ट विद द आइस. ओके, नीचे आपने बर्नर सेटअप किया है एंड दिस इज ग्लास स्टरर. सो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इन द सेटअप. और आप एक और सेकंड सेटअप लगा रहे हो जिसमें सेटअप इज सिमिलर बट आप आइस की जगह यू आर टेकिंग लिक्विड वाटर. ओके, सो जब आप इस ए वाले सेटअप में हीट प्रोवाइड करोगे आइस को तो आइस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू वाटर. ओके, एंड इस वाले केस में आप वाटर को हीट प्रोवाइड करोगे तो वाटर इज गोइंग टू चेंज टू वाटर वेपर. सो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो. So here's the complete process. You start heating the beaker on a low flame, okay, and then note the temperature when the ice starts melting. वो temperature आपको note करना है जब वो solid से liquid में convert होना start हो जाता है. And note the temperature when all the ice has converted into water. जब वो completely liquid में convert हो जाएगा वो temperature भी आप note कर लो. So solid state is being converted to liquid state here, right? Now you put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling. Okay, boil करना start करेगा. So again thermometer reading लेनी है आपको till most of the water has vaporized. So you can record the observations for the conversion of water in the liquid state to the gaseous state. तो एक्चुअल में क्या होता है हमारा मैटर के अंदर? एज द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड्स विल इंक्रीज. ठीक है, हमने पहले भी देखा था कि जैसे जैसे सॉलिड मतलब किसी भी पार्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज होगी. ओके, increase in kinetic energy will cause the particles to vibrate at a greater speed. So energy supplied by the heat will overcome the forces of attraction between the particles. So the particles will leave their fixed positions and start moving more freely. So एक stage आ जाती है जहाँ पे solid will melt and convert into a liquid. Okay. So the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. This is very important definition. Melting point कई बार exams में पूछा जाता है कि what is the melting point, so you can define it in this manner. और इसके behind जो reason है वो आपको clear हो गया कि temperature के साथ आपकी kinetic energy increase करेगी particles की. That's why it's taking place, right? So indirectly, melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. मतलब जिस मटेरियल के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा.
क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर नीडेड होगा to excite the particles and increase their kinetic energy. Okay. So the melting point of ice is 273.15 Kelvin. Okay. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. So ये term भी you should learn. It's fusion. Okay. When a solid melts, okay, its temperature remains the same. सॉलिड जब कन्वर्ट हो गया लिक्विड में तो उसका टेम्परेचर सेम रहेगा. ओके, टेम्परेचर नहीं चेंज करेगा. सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, जो आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो? जस्ट ट्राई टू आंसर दिस. So here's the answer. You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker. That is, we continue to supply the heat. This heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. हमने देखा था ना, हमें एनर्जी चाहिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए. तो ये वो ही एनर्जी है जो हम सप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही वो, जस्ट इट्स ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. So as this heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker. Okay, so ये hidden energy है, तो इसको एक और नाम हम देते हैं latent heat, because latent means hidden. So latent heat is also a very very important concept. Okay. So the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. Okay. So particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. ठीक है, क्योंकि उनमें latent heat of fusion भी added होती है. And 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin. This also you should note down. So when we supply heat energy to water, तो क्या होता है? Particles start moving even faster. So at a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. तो ये वो point होता है इस temperature पे liquid starts changing into gas. Okay. So the temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. So boiling is a bulk phenomena. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. तो water के लिए temperature कितना है? It's 373 Kelvin. Okay, that is 100 degrees Celsius. So Kelvin is the SI unit of temperature. This you should know. 0 degree Celsius is equal to 273.15 Kelvin. कई बार हम convenience के लिए इसे round off कर देते हैं 273 Kelvin. तो अगर आपको कोई temperature change करना है, Kelvin scale को convert करना है Celsius में, तो आप subtract करोगे 273, और अगर Celsius को convert करना है Kelvin में, तो आप add करोगे 273. अब हम डिफाइन करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइन की थी, सिमिलर वे में हम इसको भी डिफाइन करेंगे. सो यू नो पार्टिकल्स इन स्टीम, दैट इज वाटर वेपर, at 373 Kelvin या 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature. Okay, this is because particles in the steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. So we can infer that the state of matter can be changed into another by changing the temperature. आप temperature changes करके state को change कर रहे हो. Okay, जैसे solid to liquid, you are giving heat. Liquid to gas by giving heat. Then gas to liquid again if you are cooling, and liquid to solid again if you are cooling. Right? So we have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. Okay, but there are some that change directly from solid to gas and vice versa without changing into liquid state.
ऐसे भी होते हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉलिड टू लिक्विड ही जाएगा पहले और फिर गैसियस स्टेट में जाएगा, सॉलिड टू गैसियस स्टेट भी डायरेक्टली जा सकता है, करेक्ट। So we perform an activity here, it's activity 1.13. So we take some camphor. Camphor क्या होता है? कपूर. You might have seen it in your temples and all. Okay. So you crush it and put it in a china dish. तो आपने camphor लिया है और china dish में put किया है. You put an inverted funnel over the china dish. ये हमारा funnel है. Put a cotton plug on the stem of the funnel. यहाँ पे आपने cotton plug insert किया है. Now you will slowly heat this and you have to observe. So what you observe, the change of state is directly from solid to gas without changing into liquid state. So this particular phenomena is called sublimation, very important. So the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. Okay. So यहाँ पे आपने देखा कि it's converting directly to vapor. Thank you so much for watching the lecture and stay tuned for further updates.